So in the previous video, we have been discussed about the electrochemical cell. So in an electrochemical cell, current is flowing from cathode to the anode. So why current is flowing in an electrochemical cell? Because in an electrochemical cell, there is a potential difference between the cathode and anode. The potential difference between the cathode and anode is called cell potential. So for an electrochemical cell, how can we determine the cell potential? So for an electrochemical cell, we can determine the cell potential or cell EMF with the help of Nernst equation. So today I am going to discuss about the Nernst equation, and with the help of Nernst equation we will determine the cell potential. With the help of Nernst equation, we can also determine the potential of a single electrode. In an electrochemical cell, there are two electrodes. One is cathode, another one is anode. For a particular electrode, we can also determine the electrode potential with the help of Nernst equation. So with the help of Nernst equation, we can determine the potential of a cell potential or cell EMF, and we can also determine the potential of a single electrode. So what is the Nernst equation? Nernst equation is a quantitative relation. It is a quantitative relation between the electrode potential. It is a quantitative Nernst equation is a quantitative relation between the potential of an electrode, that is called electrode potential, and concentration of electrolytic solution. पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रोड में क्या होता है? पर्टिकुलर एक मेटल रॉड एक आयोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है. सो जब एक मेटल रॉड आयोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, देन बिटवीन द इंटरफेस ऑफ रॉड एंड सॉल्यूशन चार्जेस सेपरेशन होता है, और दैट चार्जेस सेपरेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. So for an electrode potential we can determine with the help of Nernst equation. For an electrochemical cell, we can determine the cell potential with the help of Nernst equation. So what are the application of Nernst equation? With the help of Nernst equation, we can find out electrode potential of a single electrode, and we can also determine the cell potential or cell EMF. So to explain about the Nernst equation, let us consider an electrode reaction. Let us consider this is a single electrode reaction. This is the electrode reaction. This is the reduction electrode reaction involving in an electrode. This is the reduction reaction because metal ion from the aqueous solution, metal ion accept or take up, gain how many moles of electron? N moles of electron reduces to metal atom. So this is the electrode reduction reaction. This is the reduction reaction which is involving in an electrode. So for this electrode reaction, हम लोग Nernst equation अप्लाई करने से ये इलेक्ट्रोड रिडक्शन रिएक्शन के लिए हम लोग Nernst equation अप्लाई कर रहे हैं. So this is the reduction potential for that electrode reaction, this term, and this is the standard reduction electrode potential. Standard reduction potential for a metal ion we have from the electrochemical series. In the exam, standard electrode potential will be supplied by the examiner. What is this? This is called electrode potential. This is the electrode potential for a particular electrode, and this is the standard electrode potential for a particular electrode. Minus 2.303 R into T divided by N into F log concentration of the product in this reaction. This is the metal atom in the solid state, concentration of metal atom in the solid state divided by concentration of reactant. Reactant is the metal ion in the aqueous solution. So this is the Nernst equation for this electrode reaction. ये electrode reaction के लिए this is the Nernst equation. So in this equation, what is this? ये term क्या है? This term represents the electrode potential for a single electrode, or this is the standard electrode potential.
Actually, this is the reduction electrode potential because this reaction is a reduction reaction. Reduction electrode potential for this electrode. This is the standard reduction potential for this electrode. 2.303 R into T. R is the universal gas constant, जिनका वैल्यू SI यूनिट में 8.314 joule per Kelvin per mole. T is the temperature in Kelvin scale. Standard temperature is 298 Kelvin. N is the number of moles of electron. How many moles of electron is involving in this electron reaction? N mole. F, it is known as Faraday's constant. Log concentration of the product. This is the product in this reaction divided by concentration of metal ion. So this is the Nernst equation for this single electrode reaction. Directly you have to remember. Derivation is not necessary. So in the above equation, R is the universal gas constant जिनका वैल्यू है 8.314 joule per Kelvin per mole, and T is the temperature which is 298 Kelvin. F is Faraday's constant, value of Faraday's constant 96500 coulomb per mole. So then हम लोग नर्स इक्वेशन में R का वैल्यू, T का वैल्यू, F का वैल्यू पुट कर देने से R 2.303 in according to the previous equation into R into T, तीनों को multiply करके F से divide करने से we have this value 0.059 divided by N. So this is the final form of the Nernst equation for an electrode reaction. So this is the standard reduction electrode potential for that electrode. This is the standard reduction electrode potential 0.059 divided by N log concentration of metal atom in the solid state. Concentration of metal atom in the solid state is considered as unity क्योंकि pure solid, pure liquid का concentration कितना माना जाना है? 1 माना जाता है. So this is the concentration of metal atom in the solid state 1 divided by concentration of metal ion in the aqueous solution. क्योंकि aqueous solution में metal ion का definite concentration होगा. So this is the final form of the Nernst equation for the above reduction electrode reaction. So you have to remember this final form. So in this final form, what is this? This is the standard, this is the reduction electrode potential. This is the standard reduction electrode potential. 0.059, it is a constant. Small n is the number of moles of gas participating in the electrode reaction. Log concentration of product, which concentration of product is unity 1 क्योंकि product in solid state, pure solid form में है, divided by concentration of metal ion in the aqueous solution. So this is the general form of the Nernst equation for a single electrode reaction. Let us consider an electrode reaction now. Let us consider an example of electrode reaction. So copper ion in the aqueous solution take up 2 moles of electron, reduces to copper atom. Why copper ion take up 2 moles of electron? क्योंकि copper charges कितना carry कर रहा है? 2. Then electrode reaction, Nernst equation for this electrode reaction. This is the reduction electrode potential for this copper electrode. Reduction electrode potential for this copper electrode equal to standard reduction potential for this copper electrode minus 0.059 divided by 2 log into concentration of copper atom. This is the concentration of copper atom in solid state unity divided by concentration of metal ion in the aqueous solution. So इनको find out करने के लिए using this relation we can find out this, that means reduction potential for this electrode we can find out using this relation. तो standard reduction potential for copper electrode find out करने के लिए standard reduction potential का value known होना पड़ेगा और इसका value examiner supply करेगा और क्या सप्लाई करना पड़ेगा? ये जो कॉपर आयन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन सप्लाई करना पड़ेगा. सो जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन सप्लाई करेगा एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नोन होगा, देन ये इलेक्ट्रोड का हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन, और दिस रिलेशन इज कॉल्ड नर्स्ट इक्वेशन. सो लेट अस डिस्कस नाउ वन मोर सिंगल इलेक्ट्रोड. सिंगल इलेक्ट्रोड मतलब anode and cathode. Anode and cathode, they are particular electrode. One electrode is called single electrode. Standard hydrogen electrode, जिसको shortly SHE symbol से डिनोट किया जाता है. तो standard hydrogen electrode is used as an anode or cathode in an electrochemical cell. So particular एक electrochemical cell में standard hydrogen electrode को
आइडर एज ए एनोड यूज़ कर सकता है और एज ए कैथोड यूज़ कर सकता है। एज ए एनोड भी इसको यूज़ कर सकता है, एज ए कैथोड भी यूज़ कर सकता है। जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज ए एनोड यूज़ करेगा देन ये इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि एनोड में ऑक्सीडेशन होता है इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैथोड यूज़ करेगा, कैथोड बनाएगा, देन इनमें कौन सा रिएक्शन होगा? रिडक्शन रिएक्शन होगा। सो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऐसा एक इलेक्ट्रोड है, इनमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो सकता है, इनमें रिडक्शन रिएक्शन भी हो सकता है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज अ गैस इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या है? ये जो सॉल्यूशन है दिस इज 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड, क्योंकि एसिड इज कंटेनिंग हाइड्रोजन आयन। 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज प्रेजेंट इन दिस कंटेनर। Or this is a platinum foil. This is called platinum foil. Platinum foil is connected to a platinum wire. This is the platinum wire. ये वायर से इसको सेल बनाने के लिए ये इलेक्ट्रोड को अनदर एक इलेक्ट्रोड का साथ कनेक्ट करना पड़ेगा. Then we have an electrochemical cell. And through the ionic solution, through the solution of acid, through the 1 molar solution of acid, hydrogen gas is passing at a temperature of at a pressure of 1 atmosphere or 1 bar and at a temperature of 298 Kelvin. Hydrogen gas is bubbled through the 1 molar solution of an acid. When hydrogen gas is passed through this 1 molar aqueous solution of acid, then either oxidation or reduction reaction is taking place in this electrode. इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड यूज करने से यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, एज ए कैथोड यूज करने से रिडक्शन रिएक्शन होगा. सो इफ SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बिहेव्स एज कैथोड देन रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन इट. रिडक्शन ऐसे कैसे होगा? हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन द आयोनिक सॉल्यूशन, हाइड्रोजन आयन क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा. हाइड्रोजन आयन इज कन्वर्टेड टू हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन एटम 2 है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा. तो कितना मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज द रिडक्शन इलेक्ट्रॉन रिएक्शन. इसके लिए हम लोग नर्स इक्वेशन अप्लाई कर सकता है. तो नर्स इक्वेशन अप्लाई करने से फॉर दिस रिडक्शन इलेक्ट्रॉन रिएक्शन देन रिडक्शन पोटेंशियल फॉर दिस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, this is the reduction potential for this hydrogen electrode equal to standard reduction potential for this electrode minus 0.059. this is constant divided by 2. n का जगह में यहाँ 2 आ गया क्योंकि ये रिएक्शन में 2 मोल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है. लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस का अमाउंट, क्योंकि गैस का क्वांटिटी मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. हियर हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर. सो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर का जगह में हम लोग 1 डाल सकता है डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. सो हाइड्रोजन आयन का आगे में नंबर कितना है? नंबर ऑफ मोल्स 2 है, इसलिए कंसेंट्रेशन का एक्सपोनेंट कितना आ गया? 2 आ गया. वाई एक्सपोनेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन इज 2? क्योंकि ये रिएक्शन में कितना मोल हाइड्रोजन आयन पार्टिसिपेट कर रहा है? 2 मोल. सो दिस इज द रिलेशन, दिस इज द नर्स इक्वेशन. This is the Nernst equation for this single electrode reaction, for this single reduction electrode reaction. So for this electrode, for this reduction electrode reaction, this is the reduction electrode potential for this electrode. This is the standard reduction potential for this electrode, and 0.059 divided by 2 log concentration of hydrogen gas divided by concentration of hydrogen ion. And remember it, you remember it, standard reduction potential of hydrogen electrode is always equal to how many? 0. So reduction potential for a ion you have from the electrochemical series. In the examiner, reduction potential for a particular ion, standard reduction potential for a particular ion will be supplied by the examiner. But in case of standard hydrogen electrode, how many standard reduction potential? This is equal to 0. Let us discuss now how can we calculate the cell potential or cell EMF for an electrochemical cell with the help of Nernst equation. So explain about this topic. Let us consider the Daniell cell. In the previous videos, we have discussed about the Daniell cell. We have drawn the Daniell cell diagrammatically.
सो लेट अस रिप्रेजेंट्स द डेनियल सेल. सो डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन है, इन द डेनियल सेल लेफ्ट साइड में क्या होता है, एनोड. एनोड में क्या होता है, एनोड में ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस. इन द डेनियल सेल जिंक मेटल is oxidized to zinc ion in the Daniell cell. And at the cathode, what happened in the Daniell cell, copper ion gain of 2 moles of electron reduced to copper metal. This is the cathode, this is the anode. Both cathode and anode, electrolytic solutions of cathode and anode connected by a salt bridge. These two parallel cells represent the salt bridge. So this is the representation of the Daniell cell. So any electrochemical cell we can represent like this. So ये जो cell representation में लेफ्ट साइड में ऑलवेज किसको रखा जाता है, एनोड. और एनोड में ऑलवेज कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन. एंड राइट साइड में क्या रहता है, हमेशा रखा जाता है कैथोड. और कैथोड में ऑलवेज कौन सा रिएक्शन होता है, रिडक्शन. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हिच इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सो डेनियल सेल. तो किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग रिप्रेजेंट कर सकता है इन ए सिंगल लाइन लाइक दिस. और ये जो रिप्रेजेंटेशन में दो पैरेलल साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉल्ट ब्रिज. और दिस इज वन हाफ सेल, दिस इज अनदर हाफ सेल. at oxidation half cell, zinc rod is suspended in the solution of zinc ion. In the reduction half cell, copper rod is suspended in the ionic solution of copper ion. तो कॉपर आयन का सॉल्यूशन का डेफिनिट कंसेंट्रेशन होगा, जिंक आयन सॉल्यूशन का डेफिनिट कंसेंट्रेशन होगा. सो हाउ कैन फाइंड आउट सेल पोटेंशियल फॉर दिस सेल. तो सेल पोटेंशियल और सेल ईएमएफ फॉर दिस सेल equal to cell potential or cell EMF for the cell equal to difference between the reduction potential of cathode and reduction potential of anode. Then cathode is the copper electrode, reduction potential of the copper electrode minus reduction potential of the zinc electrode. So for an electrochemical cell, cell potential or cell EMF equal to difference between the reduction electrode potential of cathode and anode. So in this reaction, copper electrode is the cathode, zinc electrode is the anode. So reduction electrode potential of copper electrode minus reduction electrode potential of the zinc electrode. Now at the cathode, reduction reaction takes place. At the cathode, copper ion from the cathode gains 2 moles of electron, reduces to copper atom. So this is the reduction electrode reaction is involving at the cathode. So ये cathode reaction के लिए हम लोग नर्स इक्वेशन अप्लाई करने से, so this is the reduction electrode potential of copper electrode cathode minus standard reduction potential minus 0.059 divided by 2. Why 2 here? क्योंकि रिएक्शन में 2 मोल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है. लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज द कॉपर एटम इन द सॉलिड स्टेट का कंसेंट्रेशन यूनिटी 1 डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन इन द एक्वा सॉल्यूशन. सो हम लोग क्या किया, कैथोड रिएक्शन के लिए हम लोग क्या अप्लाई किया, नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई किया. सिमिलरली एनोड रिएक्शन के लिए भी हम लोग नर्स इक्वेशन अप्लाई कर सकता है. एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, जिंक एटम इज ऑक्सीडाइज टू जिंक आयन बाय द लॉस ऑफ 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. लेकिन हम लोग नर्स इक्वेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए नहीं लिख रहा है, हम लोग रिडक्शन रिएक्शन के लिए लिख रहा है. तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रिवर्स कर दो, रिडक्शन हो जाएगा. प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना दो और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना दो. सो देखो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट को क्या बना दिया, रिएक्टेंट बना दिया, और रिएक्टेंट को क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया. देन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिकम्स रिवर्स, देन ऑक्सीडेशन बिकम्स क्या हो गया, रिडक्शन हो गया. सो ये रिडक्शन रिएक्शन के लिए हम लोग फिर नर्स इक्वेशन अप्लाई किया. सो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द जिंक इलेक्ट्रोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द जिंक इलेक्ट्रोड माइनस
0.059 डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है. लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल एटम इन द सॉलिड स्टेट यूनिटी डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन. So in the Daniell cell both cathode and anode दोनों रिएक्शन के लिए हम लोग क्या अप्लाई किया, नर्स्ट इक्वेशन इंडिविजुअली अप्लाई किया. Now cell potential for the Daniell cell equal to E cell equal to this and this. So इनका जगह में हम लोग क्या लिख सकता है, E नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 log 1 by concentration of copper ion. This is in bracket. फिर दिस माइनस और जिंक इलेक्ट्रोड के लिए E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड minus 0.059 divided by 2 log 1 by concentration of zinc ion. So ये दोनों टर्म हम लोग अभी एक्सर्ट कर देने से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड. और ये दोनों टर्म से हम लोग क्या कॉमन ले सकता है, 0.059 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन लिया, निगेटिव एंड 0.059 डिवाइडेड बाई 2 को कॉमन ले लिया. देन यहाँ रह गया लॉग 1 बाई कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर एन माइनस लॉग 1 बाई कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन. देन according to our previous concept, according to our previous video, standard reduction potential of cathode minus anode, this is equal to standard cell potential, E cell, E naught cell. E naught cell equal to E naught cathode minus E naught anode. Standard cell potential equal to standard reduction potential of cathode minus standard reduction potential of anode. 0.059 divided by 2. This is log A minus log B. A मतलब 1 by concentration of copper ion और B means 1 by concentration of zinc ion. So log A minus log B equal to what? Log A by B. A मतलब 1 by concentration of copper ion और B means 1 by concentration of zinc ion. Finally रिलेशन को हम लोग अरेंज करने से क्या होगा, E naught cell equal to 0.059 divided by 2 log कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन कहाँ आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा और ऊपर में क्या रह जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन. सो दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ द नर्ट्स इक्वेशन टू डिटरमाइन द सेल पोटेंशियल और सेल ईएमएफ ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. सो फाइनली विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट सेल पोटेंशियल ई सेल ऑफ द डेनियल सेल. डेनियल सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो डेनियल सेल के लिए सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए तो डेनियल सेल का हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. तो हाउ कैन फाइंड आउट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. ये दोनों का वैल्यू एग्जामिनर एग्जाम में सप्लाई करेगा और अभी हम लोग टेक्स्ट बुक देख के डालना पड़ेगा जिसका वैल्यू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दिया हुआ है. माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 log concentration of the product, zinc ion is the product divided by concentration of the reactant. So this is the Nernst equation for Daniell cell. Daniell cell is an example of electrochemical cell. So ये रिलेशन को हम लोग जनरलाइज करने से, इन जनरलाइज करने से, क्योंकि जनरल फॉर्म यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग ये रिलेशन को अप्लाई करना पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स होता है. तो न्यूमेरिकल में हम लोग क्या करना पड़ेगा, रिलेशन को डायरेक्टली अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा डिराइवेशन करना जरूरी नहीं. तो इन जनरल सपोज दिस इज ए रेडॉक्स रिएक्शन, ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. A moles of A, B moles of B produces the product, C moles of C, D moles of D. Suppose this is the overall redox reaction which is involving in an electrochemical cell. क्योंकि पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन प्लस कर देने से ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन मिलता है, ओवरऑल स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन मिलता है. सपोज दिस इज द ओवरऑल स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन
which is involving in an electrochemical cell. हम लोग रिएक्शन को जनरलाइज फॉर्म में कंसिडर कर रहा है. तो ये सेल के लिए हम लोग सपोज सेल पोटेंशियल निकालना है. तो ई सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर दिस सेल माइनस 0.059, दिस इज द कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय n, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन